Welcome to Ashant Academy. My name is Aditya, and you are watching these videos on a book written by P.S. Verma and V.K. Agrawal for class 9th. So we are discussing here biology book, especially meant for class 9th student, and by now we have covered 5 chapters. This is the beginning of 6th chapter. अब हम 6th chapter start करेंगे, which is related to improvement of the food products. So before we start this chapter, let me tell you about the context. We have already talked, especially in the previous chapter, about natural resources. हमने natural resources की बात की थी और हमने देखा था कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे resources हैं जिनको हम use करते हैं. Crops and food products are one of them. Crops उनमें से एक है. But we also know at the same time that population of world is increasing rapidly or exponentially. Recently, while this video was being prepared, we had touched the mark of 8 billion in the global population. Considering that the land area is limited and we cannot exceed beyond a specific limit for growing crops, it is very important that we have to improve the production of crops and the quality of crops. So this chapter is all about what are the resources available for us, especially from the plants and as a crop or as a food material. That might also include products from animals. And the idea is how to improve them. उनको improve कैसे करना है, ये हम इस chapter में basically देखेंगे. This is going to be comprised of several lectures. This is first one. And we start here. हम पहले पेज से start कर रहे हैं improvement in food resources चैप्टर को. और सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर वही सारी बातें बताई गई हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे. Why do we need food and what are the different components of food? So we will find here all the description written for existence of all living organisms. Food is very, very important. And humans have already started collecting and gathering food for a long time. Even you would have seen many animals in wild. आपने animals को भी देखा होगा. They chase, they hunt, and they gather food. But since human population is quite high and they have outnumbered the carrying capacity, so it is important for us now to think about improving the food quality. So one of the important aspects of improvement of food resources has been represented here, and that is sustainable agriculture and organic farming. तो इस टॉपिक का जो सबसे पहला पॉइंट है इस चैप्टर का वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है. इन्हीं दोनों टर्म्स को हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. सो दे हैव गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया विद मोर देन 1.3 billion people. We rank second in the world, and as I have mentioned you the recent update about the global population, it is touching the mark of 8 billion. इतने लोग दुनिया में हैं, and we will have to meet the demand of several more. हमको आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोगों की डिमांड को मीट करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा. तो उसको पूरा करने के लिए हमें क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द थॉट दैट हैज़ कम टू द माइंड ऑफ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट राइट नाउ. पीपल हैव थॉट अबाउट इट अर्लियर. पहले भी इसके बारे में सोचा गया है. एंड वी हैड सेवरल एग्जेम्पलरी प्रोग्राम्स which brought about an increment in the food production, and they became famous as revolutions in the crops and food productivity. One of them is called as Green Revolution, where the crop productivity especially of wheat was increased. Another is called as Blue Revolution, जिसमें फिश और एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई गई थी, इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे. देन वाइट रेवोल्यूशन विच वॉज अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. येलो रेवोल्यूशन ऑन production of oils, and golden revolution especially on the improvement of production of cereals. So there are different revolutions which have taken place and they have been highlighted here in this page. अगर हम और आगे चलें, so we will find more detailed discussion on sustainable agriculture. Now it is important to understand that we have a lot of resources, we have limited land area, we have ever increasing population. So while using that land which is meant for farming has to be met with certain requirements, and we have to perform activities which can provide us best use of that land. हमारे पास land area limited है. Crops
भी उसी एरिया में हो सकती हैं और हमें जो प्रोडक्टिविटी करनी है उसको इम्प्रूव करना है। तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हम उस लैंड के यूज़ को थोड़ा सा रीफ्रेम करें और उसको इम्प्रूव कर सकें। सो वही स्ट्रेटजी, दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इन मोर स्पेसिफिक टर्म, it is defined as adoption of various farming and production management techniques to maximize agricultural yield. एग्रीकल्चरल यील्ड को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसी एग्रीकल्चरल एरिया से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जो स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती है उनको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए? What you have to do is you have to maintain the environmental balance. Environment के साथ एक balance establish करना होगा and you have to cope with changing human needs. So practices such as mixed farming, crop rotation, intercropping and integrated farming, they have been suggested. Now let me define all of these to you. इन सब का क्या मतलब है? Mixed farming का मतलब होता है कि एक ही land के अंदर एक से ज़्यादा crops grow करना. So you know that we have generally seasons of the crops where we grow different kind of crops like wheat in one season, rice in another season. उनकी हम आगे चलकर बात करेंगे अभी कौन से seasons होते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ही फील्ड में दो तरह की crops मिक्स करके ग्रो की जाए? तो इसके लिए हमें एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रॉप मिक्स कर देंगे और ग्रो करेंगे, दैट विल बी सक्सेसफुल। We have to understand that one crop should not compete with another crop for the resources and it should not inhibit the growth of another crop. But let us imagine that we are growing large trees. एक फील्ड में हमने पेड़ भी लगा दिए हैं, फल वाले पेड़ लगा दिए हैं और उसी में नीचे का जो एरिया है उसमें हम wheat grow कर रहे हैं. So it is possible if there are two different varieties or two different type of crop plants which do not compete too much for their relative environment, then we can mix them together and grow them together. It is called mixed agriculture or mixed farming. Then we should also use crop rotation and that is very old practice. If you happen to visit some farms or countryside, you can talk to farmers, you will know that the practice of crop rotation is followed for hundreds of years. क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आप हमेशा एक फील्ड में एक ही जैसी क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप सीजन बाय सीजन क्रॉप चेंज करते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि जो नेट प्रोडक्टिविटी है अलग अलग क्रॉप्स की, आप अलग अलग तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज एवरी क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन इन एवरी सीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवरी प्लांट विल हैव अ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सो इफ यू डू क्रॉप रोटेशन you will not be leading to exhaustion or utilization of all the nutrients from the soil, but you will be recycling the nutrients in an effective way. हो सकता है कि एक क्रॉप को जिंक की ज़्यादा ज़रूरत हो, एक क्रॉप को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत हो, एक क्रॉप को कॉपर की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो अलग अलग मिनरल्स अगर अलग अलग क्रॉप्स डिफरेंट अमाउंट में यूज़ करती हैं, सो दैट विल मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉइल एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ डूइंग क्रॉप रोटेशन. So rotation means throughout the year you do not grow the same crop but you change the crops cycle by cycle. This maintains the fertility of the soil and hence productivity. Then there is another thing called intercropping and integrated farming. So what is integrated farming? This is relatively new concept. We know that certain things can be done in agricultural areas like growing silkworms, growing honeybees, उनसे हनी निकालना, या फिर सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालना, या फिर खेत में ही जो स्पेशली कुछ जापानीज़ कल्चर है इस तरह के, वहाँ के जो पैडी क्रॉप्स होती हैं, जो धान के खेत होते हैं, उसमें हर समय पानी भरा रहता है. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर पैडी और राइस. सो पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग फिश इन दोज फील्ड्स. So that means pisciculture or fish culture and crop productivity of paddy is taking place together and that is enhancing the productivity. So that phenomena, that aspect is called as integrated agriculture, which implies to the agriculture with other forms of culture such as pisciculture, aquaculture, apiculture, that is beekeeping, sericulture, silkworm grow karna, poultry grow karna. All these things, when they are coupled with normal agriculture, that is called as integrated agriculture practice, and that is also one of the means to improve the productivity and hence part of sustainable agriculture. ये भी sustainable agriculture का part है. तो यहाँ पर कुछ अब इनके एडवांटेजेस मेंशन किए गए हैं. इससे नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल साइकिलिंग बहुत अच्छी हो सकती है.
ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिन्यू करने में मदद करता है, मैनेजमेंट, फार्म का जो मैनेजमेंट है और उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें मदद करता है। इट रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड परचेज प्रोडक्शन इनपुट्स, जो सामान की रिक्वायरमेंट होती है, जो इनपुट होता है प्रोडक्टिविटी के लिए, वो कम हो जाता है। It provides an adequate and dependable form of income, so that is a plus point for the farmers who are doing this, and it promotes the opportunity in a family farming and farm communities. So multiple type of people can come together and they can do integrated agriculture and they can get involved in the same agricultural area. That is the advantage. So if you go ahead, अगर आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, so you will find another term apart from sustainable agriculture. अभी तक हम sustainable agriculture की बात कर रहे थे, अब हम एक और term देख रहे हैं यहाँ पर, organic farming. So what is this organic farming? It is a special type of farming where we do not use any kind of chemical when we are growing crops. तो केमिकल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है क्रॉप्स के लिए? उनकी ज़रूरत पड़ती है आपको क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए, क्रॉप्स को वीड्स से बचाने के लिए. सो फार्मर्स जनरली यूज इंसेक्टिसाइड्स, दे स्प्रे ऑन देम, और दे यूज वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स. But remember that these chemicals may remain attached to the plant or may be absorbed by the plant. So when you extract the fruit, vegetables or other parts, they become a component of diet. वो डाइट में भी चले जाते हैं, एंड दैट लीड टू टॉक्सिसिटी और सेवरल बायोमैग्निफिकेशन इश्यूज इन द ह्यूमंस. सो दैट हैज बिकम अ थ्रेट नाउअडेज. इसलिए ह्यूमन हेल्थ पर असर पड़ता है इन सब चीज़ों से. हालांकि फार्मर्स को वो करना अनअवॉइडेबल होता है कई बार, क्योंकि अगर वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे, अगर वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होगी. सो वी हैव टू अचीव बोथ द थिंग्स, productivity, at the same time we have to maintain the quality of food. So people started looking at some of the ways in which they can avoid the use of pesticides or chemicals, but they still have to protect their crops from insects. So there are other means, और भी तरीके हैं. सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम केमिकल्स यूज़ करें, बट वी कैन यूज़ नेचुरल सोर्सेज लाइक मैन्योर्स. So overall, we can say that organic farming is a type of practice, agricultural practice, where we avoid use of any kind of chemical, toxins or drugs or pesticides or chemicals. उसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, एंड दिस इज अ ट्रेंडिंग टाइप ऑफ फार्मिंग नाउअडेज. ये एक ट्रेंडिंग मेथड है. इसके एडवांटेजेस ये है कि इससे एक तो पोल्यूशन नहीं होता है. होप यू रिमेंबर वी टॉक्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज, हमने बात की थी कि किस तरह फील्ड से पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स बह के पानी में चले जाते हैं, दे कॉज वाटर पोल्यूशन. सो इफ यू आर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू रेमिडिएशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, एंड देयरफॉर फार्म की जो वेस्ट होती है वो सारी की सारी रिसाइकिल भी हो जाती है. दैट इज येट अनदर एडवांटेज. इफ यू टॉक अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स, कि प्रोडक्टिविटी इनकी कैसी बढ़ाई जाए, तो उससे पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि आखिर क्रॉप्स कितने तरह की होती हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उस क्रॉप के बारे में जानना जरूरी है. If you do not know when that crop is grown, in what season it is grown, what is the variety, what it is producing, then perhaps you will not be able to develop strategies for its improvement. So here are some examples of different categories of crops. Crop की जो अलग अलग categories हैं वो यहाँ पर mention की गई हैं. You have some seed crops, जैसे कि mustard होता है, mustard से oil निकलता है. If you go to some areas of Rajasthan where rainfall is scanty, you will find that area is well suited for the growth of these oil containing plants like mustard. Then we have some cereals like जो अनाज होते हैं, जैसे कि राइस, मेज, बार्ले, sorghum, ये सारी चीज़ें cereals होती हैं. ये भी बहुत बड़े एरिया में ग्रो किए जाते हैं. These have dry seeds and they are rich sources of carbohydrates. Then pulses, they are very good sources of proteins, जिन्हें हम दालें कहते हैं. Variety of various pulses like chickpea, gram जैसे चना कहते हैं, pea यानी कि मटर, black gram, green gram, मूंग दाल, उड़द, अरहर, ये सारी जो दालें हैं, they are good sources of proteins and they are kept under the category of pulses. Then apart from that, oil seeds, one of the category of the seeds, we have oil seeds which produce oil like mustard. One note has been given here, castor oil जो है वो ईडेबल नहीं होता है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो ऑयल प्रोड्यूस करती हों वो हमारे लिए यूज़फुल ही हों, क्रॉप्स ही हों. देन फ्रूट्स, इनके अंदर ही सीड्स वाली क्रॉप्स के अंदर ही नट्स और ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी आती है. एंड देन वी हैव टू मोर कैटेगरीज. अपार्ट फ्रॉम सीड्स वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रूट्स
and vegetables. So I think you know a lot of examples of these things. आप सीड्स के एग्जाम्पल भी जानते हैं, आपने दालें देखी हैं, अरहर, उड़द, मूंग, इस तरह की दालें हैं, आप इंसेट में उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। या फिर आपने फ्रूट्स भी बहुत सारे देखे हैं, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, पाइनएप्पल, you can see them in the inset again, as well as you would have seen lot of vegetables in day-to-day life. If you're watching this video in winters, then perhaps you will have very rich varieties of vegetables in the market. Every day you will be able to see different vegetables like spinach, leafy vegetables, or carrot, or maybe बहुत cauliflower, cabbage, बहुत तरह की vegetables market में देखने को मिलती है. So all of them are either leaves or fruits or vegetables. So these were primary categories of different kind of crops which are produced. Apart from that, कुछ roots की category भी है, roots, stem और leaves. तो vegetable के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि vegetables कई तरह की हो सकती हैं. कुछ उनमें से roots हो सकती हैं, कुछ stems हो सकते हैं, जैसे कि carrot एक plant की root है जिसे हम खाते हैं. Potato is a kind of stem. Radish, मूली जो है that is also a root. Spinach or lettuce, these are examples of leaves. So different parts of plants are actually grown as crops and we use them in different manner. Apart from basic vegetables, fruits, we also have another very important category called spices, yani ki masale, condiments. You should be proud that India is called as spice capital of the world because spices are produced here in large quantities and good qualities, especially state of Kerala that produces huge amount of spices in India. So spices are sometimes leaves, sometimes stems, flowers or even bark of a plant. वो भी plant के अलग अलग parts होते हैं. तो ये सारे तरह के जो plants हैं वो grow किए जाते हैं, इनकी crops की categories हैं. At the same time we do not have the crops grown in the same season. हर एक crop के grow होने का अपना एक cycle होता है, अपना एक सीजन होता है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमने देखा कि क्रॉप्स कितनी तरह की होती हैं. इसके अलावा क्रॉप्स कई सारे सीजन्स में ग्रो होती हैं, यानी कि क्रॉप ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लांट को आप कभी भी ग्रो करेंगे तो ग्रो हो जाएगा. द ग्रोथ ऑफ द प्लांट और देयर मैच्योरेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सीजन is prevailing at that time. So there is an impact of seasons and therefore we can divide these crops into different groups. For example, we generally divide the crops into two main seasons. One are called as Kharif season, which is generally the rainy season or summer season. Another one is called as Rabi season. These are Indian names which have been given by the farmers to identify the crop seasons. तो जब धान की खेती होती है, आपने देखा है कि गर्मियों के दिनों में जब गर्मियां खत्म होती है, जब मानसून शुरू होता है तो जनरली पैडी यानी कि धान लगाया जाता है. सो दैट इज पार्ट ऑफ खरीफ सीजन. वेयरएज जब सर्दियां आती हैं, सर्दियों में आप देखते हैं कि उस टाइम पर गेहूं, वीट, इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं, इस तरह की क्रॉप्स लगाई जाती हैं. सो फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, आई मीन विंटर्स, दैट इज द पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स. From June to October, the crops which are grown, they are called as Kharif crop. But there is also a brief period between Kharif and Rabi. कभी-कभी मार्च से जून के बीच में एक brief period और मिलता है जहाँ पर कुछ crops grow की जा सकती हैं, जैसे कि melon, watermelon, bitter gourd यानी कि तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें जो हैं, they all come under Zayad, another kind of group of, or you can say, period of the crops. Now, one question if you want to ask कि ऐसा क्यों होता है कि plants हर season में grow नहीं हो सकते? So basically, in Indian context, we have different day length across the year. हम देखते हैं कि सर्दियों में दिन की लेंथ कम होती है, रात की लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि समर्स में अपोजिट होता है. So the amount of light or duration of light that reaches plants is called as photoperiod, and that has impact on their growth and development. Therefore, you cannot expect that a plant that is supposed to be part of Rabi crop that will be capable of giving good efficiency in Kharif season as well. But if you talk about the areas of the world, दुनिया के ऐसे एरियाज की बात करें जहाँ पर डे और नाइट की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बदलती है, वहाँ पर आप इन क्रॉप्स के सीजन्स को कह सकते हैं कि दे विल बी मीनिंगलेस एंड यू कैन ग्रो एनी क्रॉप. सो इट इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द फोटो पीरियड्स एंड ऑल्सो द सीजनैलिटी ऑफ मॉनसून.
because Indian subcontinent is also affected by seasons like monsoon, so that is also controlling the productivity of these crops. इससे पहले कि हम आगे जाएं, I'll say that this will be the part 1 of this video. We will cover rest of the things. बाकी की चीज़ें हम part 2 में cover करेंगे. अगर हम summarize करें part 1 को, तो अभी हमने केवल crop के बारे में समझा, क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन से तरह के प्लांट्स को क्रॉप कहा जाता है, एंड हाउ वी कैन क्लासिफाई देम. इन द कमिंग पार्ट वी विल टॉक अबाउट देयर मैनेजमेंट. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू आर कंटिन्यूइंग योर रीडिंग ऑफ दिस बुक. आपको इस वीडियो की मदद से, इन सारे वीडियोज़ की मदद से इस बुक को समझने में मदद मिल रही होगी. So stay connected with us, keep watching and share the information with your friends. Thank you very much. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.